नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अर्चिंत। लैंड बॉर्डर्स के ऊपर हमारा फोकस हमेशा रहता है, बट देयर इज अ न्यू डोमेन। न्यू तो नहीं है, इट्स अ वेरी ओल्ड डोमेन, बट इट्स अ न्यूली डिस्कवर्ड डोमेन जो सबके सामने आ रहा है, विच इज द मैरिटाइम डोमेन। दिस इज ऑलवेज बीन देयर, हमारी नेवी हमेशा इसके ऊपर काम करती रही है, बट खैर मेन स्ट्रीम पब्लिक ओपिनियन में कभी था नहीं, अब आ रहा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस मोर, क्योंकि सप्लाई चेन कट्स, ट्रेड रूट्स, ऑयल, होल लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड ऑन दिस। तो बात करते हैं वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा से फॉर द सेकंड टाइम ऑन डेव टॉक। सर, फर्स्टली नमस्कार, थैंक यू सो मच सर, लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू। Namaskar and Jai Hind, Adiji. Thank you very much for getting me on your program. The traction that you have got is phenomenal. तो आपके सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सर। सर, मेरे को आपसे ये पूछना है कि जिस तरह से अभी जियोपॉलिटिक्स चल रही है सर, यू नो, पर्शियन गल्फ की बात हुई थोड़े टाइम पहले, रेड सी इज बीन इन द फोकस, ब्लैक सी के ऊपर टेंशंस हैं, टर्की बिकॉज इट कंट्रोल्स वहां पर थोड़ा वो एक्सर्ट करता है अपने आप को, चाइना इन द मैरिटाइम डोमेन इन साउथ चाइना सी, ये चीजों पे कोई बात नहीं करता बिकॉज एवरीबडी इज लुकिंग इनलैंड फॉर द इनलैंड वॉर, आर्मी नेवी, आर्मी एयरफोर्स, आर्मी एयरफोर्स, यू नो। How do you see this geopolitics shifting in the next 2, 3, 5 years, जहां पर फोकस आगे जाके मैरिटाइम डोमेन पे ज्यादा रहेगा? बिकॉज वी सी ग्लोबल पावर्स आल्सो, फॉर एग्जांपल अमेरिका, जिसकी आर्मी इतनी नहीं है, बट इट मेंटेन्स इट्स नेवी स्टिल to a certain, degree of what it was before, but it still maintains a certain amount of power in the navy. So how do you see this geopolitics shift, especially in the maritime domain, sir? Opening. Adiji, thank you very much. I think it's a very serious question, to be very honest. But what I'll suggest is that अगर आपके दर्शक, if they read the history, if you go back to First World War, Second World War, the geopolitics was all around the sea. Ultimately, it terminated at sea. And sea warfare, the naval warfare, is always decisive. You know, either you win or you lose. You look at America, what it did. You look at how Napoleon lost the plot, how Japan was defeated. It was all to do with really maritime power. Now, maritime is a larger volume if you look at the entire globe. So, 70% of the world is really water. And therefore, I would say, as you rightly said, कि अब पब्लिक व्यू में थोड़ा ज़्यादा आने लगा है। उसका रीज़न ये है दैट लोगों की समझ में ये डोमेन अब आने लगा है कि नहीं, हमारा जो खतरा है, क्योंकि ये तो आपको मानना पड़ेगा कि लैंड बॉर्डर्स वी आर ओनली डिफेंडिंग, वी जस्ट हैव टू डिफेंड आवर टेरिटरी, बट एट सी देयर इज ऑल द रूम to increase your influence not only in Indian Ocean but in the entire Indo-Pacific. And you will see that the geopolitics will pan out on the Indian Ocean, in the Indo-Pacific as you go along. Because you see, on the land, the scope is limited. Either it is a boundary conflict or it is a ethnic conflict. Nothing more than that. Whereas the prosperity of human being, particularly India, it lies over trade and commerce at sea. भारतवर्ष का 95% जो ट्रेड है वो समुद्री रास्ते से जाता है। तो हम और आप, जो भारतवर्ष की इकोनॉमी बढ़ रही है और लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, उसका कारण ये लैंड नहीं है। लैंड में जो आप उपजाते हैं उसको हम खा के ख़त्म कर देते हैं। अब बहुत ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि आप लैंड में किससे कीजिएगा ट्रेड? कोई तो आपका दोस्त नहीं है। एक बांग्लादेश के साथ आप ट्रेड कर रहे थे, वो भी करीब करीब ख़त्म ही होता जा रहा है। चाइना के साथ आप देख ही रहे हैं क्या हाल चाल है। चाइना का ट्रेड भी सारा ऑन सी आता है, पाकिस्तान लेसर सेट द बेटर। तो जब हमारा पूरा ट्रेड अगर 95% वो 5% भी ओवर लैंड है, आई थिंक देयर इज अ नीड टू डू अ री हिसाब किताब ऑन दैट, इट मे बी डिफरेंट नाउ। So, Navy's primary role, Adiji, is to secure the sea lines of communication. When we say sea lines of communication, हमारे जो कमर्शियल जहाज जिस रास्ते से ट्रेड को ले आते हैं और ले जाते हैं, उनको आपत्ति नहीं हो, उनके ऊपर कोई हमला न करे, वो ना बंद हो जाए,
वो बंद होने से हमारे देश की बहुत क्षति होगी। हमारा जो जीडीपी है वो कम हो जाएगा। हमारे लोग जो है जिस तरह से रह रहे हैं, रहन सहन में काफ़ी कमी आ जाएगी। तो कहाँ कहाँ से, फॉर्चुनेटली बाय गॉड्स ग्रेस, इंडियन ओशन, भारतवर्ष जो है वो बहुत फॉर्चुनेट है कि हम इंडियन ओशन में जैसे हम घिरे हुए हैं समुद्र से, और आप थोड़ा सा और बाएं दाहिने जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आने के सिर्फ तीन चार रास्ते हैं, एंड दे आर कॉल्ड द चोक पॉइंट्स। एक तो आपका मलाक्का स्ट्रेट है जहाँ से कि ईस्ट से आता है, और दूसरा आपको गल्फ ऑफ एडन है जहाँ से कि वेस्ट से आता है, और अंडमान निकोबार के नीचे और इंडोनेशिया के पास दो तीन और स्ट्रेट्स हैं, लेकिन वो रास्ता बहुत दूर हो जाता है, आपको जल्दी भी पहुंचना है। और ये जो हमारे दो एरियाज हैं जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया, चोक पॉइंट्स कहते हैं, उसके ऊपर निगरानी रखना बहुत आवश्यक है। You must have seen that the Houthis, they started attacking all commercial ships passing through the Red Sea. Red Sea is a prolongation of same Gulf of Aden. वहाँ से निकल के वो इंडियन ओशन, अरेबियन सी में आते हैं। या फिर आप अफ्रीका का कोस्ट देख लीजिए, या साउथ अमेरिका का कोस्ट देख लीजिए। ऐसा नहीं कि वहाँ से ट्रेड नहीं आता, आते हैं, लेकिन आप देखिए कितना समय लगेगा, कितनी दूर है अगर मैप को देखें आप। तो हमें इसको प्रोटेक्ट करना अपने ही कॉमर्स के लिए सिर्फ नहीं, इट इज़ फॉर ग्लोबल कॉमर्स, क्योंकि हम जो है दुनिया के कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, और उनको अगर हानि होती है तो हमें भी नुकसान होगा। सो नेवी का है प्रोटेक्ट द सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इट डजंट से दैट इज ओनली इंडियन फ्लैगशिप, नो। अभी आपने देखा होगा जबकि गल्फ ऑफ एडन में हुथीज अटैक कर रहे थे, तो वहां से जितने जहाज संकट में थे या हिट होने के बाद बाहर निकले, भारत की नौसेना ने जितनी हाईजैकिंग अटेम्प्ट है उसको खत्म कर दिया। हमारे मरीन कमांडोज को एट सी ड्रॉप किया गया, और वो उन लोगों से भिड़ गए और उनको हटा दिया, कभी कुछ लोग अरेस्ट कर लिया। जो टूट फूट गए थे उनको टो करके बॉम्बे लेके आए, गुजरात लेके आए, उनकी रिपेयर कराई और उनको घर भेजा। इतना ही नहीं, उसमें ऐसे भी जहाज थे जिसमें हमारे पाकिस्तान के भाई बंधु लोग थे, कुछ लोग चाइना के भाई बंधु। तो हम एट सी जो है वो वसुधैव कुटुंबकम जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो ट्रूली एप्लीकेबल टू नेवी, क्योंकि हम सर्च एंड रेस्क्यू में कोई भेदभाव नहीं करते, क्योंकि नाउ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन लाइफ। वी डोंट किल पीपल जस्ट बिकॉज दे आर योर एनिमी और योर एडवर्सरी, नो। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो अब क्षति होगी, चाहे कोई भी देश हमें अगर बर्बादी हमारी करना चाहता है, तो हमारे जो कॉमर्स के लाइन्स हैं, हमारे जो कमर्शियल शिप्स हैं, वो उनको हिट करेगा। एक तो वो है। दूसरा है कि बगल में जो हमारा एक बड़ा दोस्त है पाकिस्तान पश्चिम में, वो बहुत नज़दीक है। हमारा कोस्ट लाइन ऑलमोस्ट कॉन्टिगुअस है, मिला जुला है। तो अगर वो अपने सबमरीन पनडुब्बियों को भेजकर हमारे जितने इंपॉर्टेंट हार्बर्स हैं, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र बॉम्बे हो गया, गोवा हो गया, कम से कम वेस्ट कोस्ट में, या कोचीन हो गया, और वहाँ पे अगर नीचे हर जगह सबमरीन को छुपा के बिठा दें और लड़ाई की घोषणा हो जाए, तो आपके तो जहाज जब तक निकलेंगे, वॉरशिप्स जब तक निकलेंगे, तब तक तो आप उसको पीटेगा, वो मार देगा उसको। तो हमारा बड़ा नुकसान है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वी हैव व्हाट इज कॉल्ड द मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट। तो 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट नेवी ने ढूंढे हैं, जहाँ की अगर हमारा हम उनको देखते रहें, रिकॉनेसेंस करते रहें, सर्वेलेंस करते रहें, और कोई भी खतरनाक दिखाई पड़े तो उसको हम वहीं पर सलट लें, अंदर नहीं आने दें और नज़दीक नहीं आने दें। आप, बहुत लोग जायज़ हैं, at any time in the Indian Ocean, of all ships present, if you count, 90% ships are commercial ships engaged in their own commerce. आप उनको तो नहीं पीट सकते, you can't hit them. So identification is very important. How do you identify? How do you track? तो हमारी एक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, आपने सुना होगा, ये आपके दर्शकों ने, आप तो काफ़ी वाकिफ़ हैं इन चीज़ों से। तो उसमें क्या होता है कि हमारे सैटेलाइट, हमारे मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो P8I जिसको बोलते हैं, वो हमारे शिप्स और सबमरीन, ये सारे जो है इन 7 जगहों पर हावी रहते हैं, वो देखते रहते हैं, और कोई भी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी सरफेस पे कोई भी चीज़ दिखाई पड़ा तो वो उसको एक सेंट्रल इसमें डालते हैं, एक क्या क्या कहा जाए आपको, एक नेट में डालते हैं, जैसे इंटरनेट होता है।
उसी तरह से हमारा एक मॉडल उसमें डालते हैं और वहाँ पे उसकी एनालिसिस की जाती है कि कौन दुश्मन के हो सकते हैं और कौन हमारे नॉर्मल ग्लोबल कॉमन्स के हैं। तो जो हमें लगता है कि एडवर्सरी की है तो उसको हम ज़्यादा ट्रैक करते हैं, इसलिए कि बाद में अगर ज़रूरत हुई तो हम उनके साथ सलट सकें। सर ये जो आई मीन ऑब्वियसली ये 7 लोकेशंस विल नॉट बी समथिंग दैट पब्लिक के नॉलेज में रहेगा, बट हाउ डू वी सिलेक्ट दी 7 लोकेशंस? किस तरह, क्या क्या देख के सिलेक्ट किया जाता है? हमारे जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन हमारे देश के लिटरली ऐसे करके दे हग आवर कंट्री एंड गो। तो आपका जो अभी नया लक्षद्वीप का जो नया बेस बना है एनएस जटायु और मालदीव्स के बीच में से एक जो लाइन जाती है जस्ट साउथ ऑफ श्रीलंका, इट गोज अक्रॉस दैट सी लाइंस एंड 6 डिग्री 9 डिग्री चैनल जो आपके वहां पर अंडमान में है। प्लस आपका नीचे वाले जो इंडिया अफ्रीका कॉरिडोर आ रहा है, आपका रेड सी की तरफ से चीजें आ रही है, वहां पर आपको देखना है। प्लस आपके ये स्टेट्स की तरफ से नीचे से चीजें, हाउ डू यू, आई मीन इट्स सच अ वास्ट प्लेस। तो आप तो लिटरली यू विल बी ऑन रोटेशन थ्रू आउट द ईयर ऑन दीज थिंग्स। जी आदित्य जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एब्सोल्युटली राइट। आई मीन यू हैव अ गुड आइडिया ऑफ ज्योग्राफी। अगर आप भारत का नक्शा देखें और अगर आप खड़े हो जाए सदर्न पेनिनसुला की टिप पे, रामेश्वरम या फिर विवेकानंद पॉइंट इफ यू लाइक, तो आप वहाँ पे अगर खड़े हो जाएं तो आप जो हमारी परिधि है उसका डायमीटर करीब 3000 किलोमीटर है। इट इज़ 3000 किलोमीटर्स ऑफ डायमीटर एंड 1500 किलोमीटर्स का रेडियस पे अगर आप सर्कल बनाएं तो वो पूरा एरिया जो है ये it's you know it is a very big area, as you rightly said. So what do we do? As I said in the beginning, that there are certain points through which the ships come and go. There are no more than 7 areas. So what we have done is that we have chosen those areas, क्योंकि जब तक अगर जहाज को इंडियन ओशन के अंदर आना है तो वो इन्हीं रास्ते से आएगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम उनको एंट्री पॉइंट पे ही हम मॉनिटर करना शुरू कर दें तो हमारे शिप्स जो, वो हवाई जहाज तो नहीं है, उतनी तेज़ नहीं भागते हैं। 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर उनकी स्पीड होती है। तो कितनी दूर जाएगा 10 घंटे में? 450 किलोमीटर। तो हमको बार बार उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ उसकी पोजीशन अपडेट करते रहेंगे। तो हम उसको 8 घंटे के बाद भी देख सकते हैं, 6 घंटे के बाद भी देख सकते हैं। तो एक बार व्हेन वंस वी स्पॉट देम एट द टाइम ऑफ एंट्री इनटू द इंडियन ओशन एंड दिस मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस नेटवर्क, then it begins to follow it. It follows and sees that is there anything which is coming close to the coastline, हमारी coastline पे। तो हम जो है उसकी निगरानी करते हैं ये in a diameter of 3000 kilometers. That is why we have 7 points where combination of ships, maritime patrol aircraft, submarines and satellite, and may I say visual intelligence which are in various places. तो हम फ्रॉम द टाइम जितने भी हार्बर हैं इस एरिया में, वहाँ से जो भी शिप निकलते हैं उसकी हमें जानकारी पहले से होती है, क्योंकि ये जो है पब्लिक डोमेन में है। और हम लोग अगर हमारी जो जिस लोगों के साथ जो हमारी एग्रीमेंट्स हैं, आपने सुना होगा वाइट शिपिंग एग्रीमेंट। तो वाइट शिपिंग एग्रीमेंट में ऐसा है कि वो दे वी एक्सचेंज नोट्स, हमारी तरफ से उनके कौन से जहाज जा रहे हैं, उनके तरफ से कौन से जहाज जा रहे हैं। तो उसको हम, हमारा एग्रीमेंट है सिर्फ वाइट शिपिंग मीन कमर्शियल शिप्स। और हमारे जो नेटवर्क हैं सिविल पोर्ट्स के, दे आर ऑल्सो नेटवर्क विद द नेवल वेबसाइट। तो कोई भी जहाज आना जाना जो कर रहा है उसकी हमें जानकारी हमेशा रहती है। और ये ड्यूटी बाउंड है, जितने भी पोर्ट वाले हैं, पोर्टर्स, they have to feed this information into the national maritime domain awareness. It's a huge thing. Just for one example, एक उदाहरण आपको देते हैं। वेस्ट कोस्ट में जहाँ मैं कमांडर इन चीफ था, एक किसी टाइम पर there are roughly 50,000 contacts. Out of that, at least 30 to 40,000 are fishing boats. Now, how do you identify them? अब कसब का केस ले लीजिए, आप कितने बोट पे जाके कितने लोगों को चेक कीजिएगा? तो ये एक बड़ी समस्या थी, अब नहीं है। अब इसलिए नहीं है कि अगर हम अपने बोट्स को पहचान लें
तो बाकी हमारे जो नहीं एडवर्सरी के हैं। तो हमारे जितने बोट्स हैं उनको ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से लैस किया गया है, आईएएस, और वो ट्रांसमिट करते रहते हैं अपने पोजीशन, और हम उसको सैटेलाइट से देख सकते हैं या हमारे जो शोर बेस्ड रेडार है उसको मॉनिटर करते रहते हैं। तो अब आप कहेंगे कि क्या सभी शिप में लगा हुआ है ये? नियम ये है कि 300 टन से ज़्यादा जितने बड़े शिप हैं उसमें सब में होना अनिवार्य है बाई लॉ। जो 300 टन से छोटे, ज़्यादा फिशिंग बोट जो है 300 टन से छोटे होते हैं, तो उनको भारत सरकार ने, डीआरडीओ ने एक अलग से एआईएस बना के सारे शिप, सारे बोट्स को दे दिया है। नंबर वन। सेकेंड थिंग, बोट्स की पहचान हवाई जहाज से ऊपर जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, हमारे डॉर्नियर होते हैं या पीएटाई होते हैं या फिर कोस्ट गार्ड के, सारे एक नेट में, कोस्ट गार्ड भी उसी नेट में। तो पहचानेंगे कैसे ऊपर से कि हमारा है कि किसका है? तो हर स्टेट, जितने कोस्टल स्टेट हैं, उनको एक बोट्स की कलर स्कीम दी गई है। तुम्हारा येलो, तुम्हारा रेड, तुम्हारा ग्रीन, तुम्हारा ऑरेंज। तो जितने हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं, अब जैसे हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, ये यहाँ पे 5, और ईस्ट कोस्ट में हो गया आपको उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है ना? तो ये जो है 5 और 3 8, तो ये 8 कोस्टल स्टेट्स हैं हमारे। एंड अंडमान निकोबार तो बाई इटसेल्फ है, उनको कोई खास जरूरत नहीं है। सो ये क्या होता है कि उसको हवाई जहाज जब देखते हैं हमारे ऊपर से फलाने कलर का, तो उनको पता है कि हमारे, और हर जगह के बोट की कंस्ट्रक्शन थोड़ी डिफरेंट होती है। केरला का डिफरेंट होगा और कलर भी डिफरेंट होगा। सो नाउ वी नो that yes, this is our boat, so therefore which is not our boat, that needs to be tracked. And then we have coastal police, marine police, coast guard. Closer to coastline till about 25-40 kilometers, the coast guard के जो छोटे पेट्रोल बोट्स होते हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन जाती है कि फलाने 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 जो है उनमें कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा, देखो कौन है। सो दे गो एंड फाइंड आउट। सो द सेक्टर्स मेड बोथ साइड, कि इस सेक्टर में 25-30 मील तक कोस्ट गार्ड, उसके बाद नेवी। तो ये 25-30 मील के अंदर जो है उनके शिप्स हमेशा डिप्लॉयड रहेंगे। क्यों? अगर नज़दीक आ गया तो रिलेटिवली ही विल रीच द शोर क्विकर, बट अगर वो दूर है तो उसको भी काफ़ी डिस्टेंस आना है। सो इट इज, you can miss him for 2-3 hours and yet he may be somewhere between 200 miles. So this mathematics is done by the maritime domain awareness, and the data can be fed online to all the maritime patrol aircraft, all the ships and all submarines. So everybody is on the same net, but the numbers are very large. Then you can filter it out, west coast, this distance, that distance. So this is a huge, it's a different world, Adiji. Now, if you know that अभी पता लगा कि मान लीजिए टेंशन है, अभी से सॉरी पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है या ये कुछ हो गया इस तरह की बात, तब तो आप ये नहीं कहोगे कि हमारे शिप्स जो हैं, आर शिप्स हैज टू कम टू हार्बर एंड देन लोड द वेपन्स एंड ऑल। नो, whenever our ships and submarines, even in peacetime, when they leave harbor, they are fully loaded to war, the war में जितना ले जाएंगे वो एब्सोल्युटली वॉर लोड में निकलते हैं सारे के सारे। नंबर वन। सेकेंड थिंग है दैट हमारा पीस टाइम रोल बहुत है नेवी का। HADR जो है, कहीं आंधी आ गया, कहीं तूफान आ गया, भूस्खलन हो गया, वहां पे नेवी को आप देखेगा फट से पहुंच जाएगा। दैट इज बिकॉज वी आर डिप्लॉयड इन दोज एरियाज, एंड एवरी शिप विच लीव्स हार्बर दे कैरी HADR ब्रिक, बोलते हैं BRIC। सो इट्स अ कंटेनर and that has got टेंट होगा, मेडिकल की आइटम होगी, कुछ होगा, पीने का पानी होगा, खाने के सामान पैक्ड होंगे। वी कैरी इट ऑल द टाइम। सो ये जो है ये एक दिस इज वन थिंग दैट वी डू। कैन आई जस्ट टेक अ पॉज? So as I was saying, that this maritime domain awareness is a big thing, and I was talking about HADR, human assistance and disaster relief. So why it is loaded? Because it requires immediate action.
and you can't come back to harbor every time, which will take you quite some time because things are slow. Submarines are even more more than that, because if you go on surface, you will get spotted. Mhm. So moment it leaves harbor underwater. Now, as you know that the diesel submarines have a limitation. If you don't have a air independent propulsion, then they need to charge their battery, because underwater तो the engine doesn't work. Hmm. डीजल इंजन को हवा चाहिए, तो कैसे चलेगा वो? तो जब वो डीजल पे चलता है, तो उसकी बैटरी चार्ज होने लगती है। बहुत बड़ी बड़ी बैटरियां होती है, मेनली लिथियम। और जब वो हर 5 दिन 6 दिन में उसको पानी के नीचे से ऐसी डेप्थ पे आना होता है कि उसके जो स्नॉट बोलते हैं जिनको, वो स्नॉट एटमॉस्फेयर से हवा खींचने के काबिल हो, और तब हम डीजल इंजन चलाएं और बैटरियां चार्ज होती रहे। ठीक है ना? Hmm. लेकिन जब आप दुश्मन के बहुत नजदीक होते हैं तो आपको कोई लिबर्टी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि 25 दिन 30 दिन वो नीचे बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको भी तो एंटी सबमरीन वेपन से बचना है। Because always the ships are always on prowl looking for submarine to kill, Yeah. and submarine is always there to, it's a cat and mouse game. Even in our exercises, it's not easy to find them. And where we believe the submarine is, and we carry out dummy action, and then you ask that submarine to surface, तो कहीं और surface हो जाएगा। then you blow whistle कि मैं तो यहाँ हूँ। तो ये एक एंटी सबमरीन इज अ वेरी वेरी fine sort of, shall I say, an art to catch a submarine. We have got our operators जो कि हियरिंग लगा के बैठे रहते हैं, और आवाज जो आती है सोनार से, उससे पहचानते हैं कि पत्थर से आवाज आ रही है, मछलियों से आवाज आ रही है, या शिप से आवाज आ रही है। And we don't let them go. These people have sat in one equipment for 7 years, 10 years, 15 years. So we have to protect their promotion prospects so that they pay, etc. Also, their own personal thing. They can't be out for too long. They all have families, children, घर है उनका, छुट्टी जानी है. All that has to be worked out. So HR management in the Navy is a fairly challenging task. Same thing goes for the ship. If the ships are deployed in 7 points, and let's say 2 ships, 3 ships, अब जैसे in between right now Eastern Fleet ships are visiting, they are going to be in South China Sea. There the fleet commander is leading us. Right now is in Singapore. Tomorrow he'll go to Vietnam. Then he will go to Japan. So this is part of the overseas deployment of the ships. So when they are there, then on some points we may not have this ship deployed on duty. So they'll get a little break. Okay, they will come back to harbor. Ships also require maintenance, just like aircraft. After every sortie, there is a turnaround inspection. TRS बोलते हैं, turnaround servicing, after flight servicing, before flight servicing. 50 hours में ये करना है, 40 hours में ये करना है, 100 hours में ये करना है. Similarly, ships have got, except that ships are big, and therefore all their servicing takes little longer. अब जैसे सेल्फ मेंटेनेंस पीरियड होती है, SMP, दैट टेक 7 days, क्योंकि अपने आप इतनी सारी उसमें थिंग्स आर लेट डाउन, बाय द टाइम यू फिनिश ऑल दैट विल टेक 7 days. Then you have an AMP, assisted maintenance program, where you require assistance of the dockyard, and that takes about 15 days. छोटे ship है तब. If you have a ship like aircraft carrier, it might take 90 days. So every ship has got a routine laid down, prescribed, so that you don't have a unforeseen breakdown at sea. So normally 7, 8, 10 days. Normally there's the self-maintenance period, possibly once in 2 months or once in 3 months, depends on what type of ship you're on. So this is HR is a big challenge, and that is why now you will say the focus. You asked me right in the beginning was a good question, that why the focus is now on this. The focus is basically by the public, because the government has become more transparent in telling what is happening. I know the wars used to be fought only between armed forces. Now it is not so. The whole public is involved, particularly social media, other media,
the transparency. The media has been given too much of freedom. You will find media actually reaching on the spot of fight, and they will tell you गोली यहाँ चल रही है, गोली वहाँ चल रही है. Unfortunately, they can't do it at sea. Number one. Second thing is the navy doesn't have a border, Adiji. Unlike land, you know your limit. The navy doesn't have a limit. Your the laws of the land apply only up to 12 nautical miles, which is roughly 24 kilometers. In that, if you do any crime, anything is done, then you will be treated as per the Indian Penal Code. Now it is called Nyaya Samhita, as per that, or Criminal Code. Beyond that, sea is everybody's. So you can't just go and you can't fire unless your country has declared a war, and it has declared that every ship belonging to Pakistan is belligerent. This is an official intimation to other ships so that Indian Navy ships can make a telegram to the world that keep clear of this area. Otherwise, if you enter, it will be at your own peril. Like they did this time. Even this time, लोग कहते हैं कि what did Navy do? Navy does everything which is invisible. Navy had blocked all the harbors. None of the replenishment of drones, ammunition, which comes from China and Turkey, could not enter the harbor. So, कितनी फायर करेंगे? And the stock is very little. Now you will see in the newspapers, they're rapidly trying to, procure those things. So we stopped that. None of the warships would come out. They came only stayed inside their 12 nautical mile because the Navy had made a signal that we are operating, not war, we are operating in so and so area, bounded by latitude, longitude, so and so, चार corner पे दे दिया उनका. Live firing practice is going on. और उन्होंने फायरिंग करके भी दिखाई, उसको आपको ट्रांसमिट भी करना पड़ेगा. हाउ डू पीपल नो कि फायरिंग कर रहे हैं कि नहीं? सो ऑल द प्रैक्टिस फायरिंग वाज. दैट इज व्हाई इफ यू रिमेंबर द डीजी नेवल ऑपरेशन kept saying that we sharpened our skills, we honed our skills by doing firing practice. Actually speaking, this is the main reason that you have to tell the world that you're firing, otherwise people say bluff कर रहा है. You can make a telegram and still not have ships there. So this is a. And here, the just like बॉर्डर में अब ये तो कॉमर्स तो चलता रहेगा, हमारी शिप जाती रहेंगी. कब किस समय कौन किसको ठोक दे, हु नोज. हु गिव्स देम सपोर्ट, हाउ विल यू ब्रिंग देम? एंड दे डोंट हैव वॉर फाइटिंग पीपल ऑन बोर्ड. कमर्शियल शिप्स डोंट है. आजकल लोग हायर करने लगे हैं, ऑन बोर्ड हायर करने लगे हैं, बहुत सारे शिपिंग लाइंस करती हैं, बट उसमें लीगल प्रॉब्लम्स हैं. दैट वी कैन आंसर सेपरेट क्वेश्चन. So this is how it is why now this scene has come, that it is more transparent, and now people are beginning to realize that 95% of what you do, what you have here, whatever comes from outside, 95% comes from the sea. And who protects them? Navy has to be deployed in that. बताया ना 3,000 किलोमीटर की डायमीटर में. जी सर, इसके अंदर नाउ आपने ये एक बेसलाइन हमको दिया है. नाउ इसके अंदर भी इंडिया का तो एक रोल रहेगा कि अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को धीरे धीरे करके एक्सपैंड करते रहो. ऑब्वियसली जैसे जैसे आपके ट्रेड रूट्स बढ़ेंगे, सो यू विल से यार मेरे को यहाँ पे भी चाहिए, मुझे वहां पे भी चाहिए. फॉर एग्जांपल, अडानी साहब हैज अ पोर्ट इन वियतनाम. नाउ अडानी इज अ इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रियलिस्ट, बट ऑब्वियसली आपका इंडस्ट्रियलिस्ट है तो कहीं ना कहीं नेवी का वो आएगा, यार वहां पर कुछ प्रॉब्लम है तो उधर पे भी कवर करना है. फिलीपींस में आपके पास कुछ डील्स हो रखी हैं. आप मोदी जी had gone to Malaysia, he spoke Brunei, there's some talks happening there as well. अफ्रीका में मोगादिशु की तरफ. तो हाउ अभी तो आप एक्सपैंड करने की बात कर रहे हो यहाँ पर. सो हाउ विल दिस गो इनटू दैट एक्सपेंशन मोड? एंड यहाँ पर जो मेन सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, ब्लू वाटर नेवी वर्सेस अ ग्रे वाटर नेवी, आप कहाँ पर इंडियन नेवी को डालेंगे आज? हमारी नेवी ब्लू वाटर नेवी है. जब ये 3,000 किलोमीटर की परिधि में है और इंडो पैसिफिक में हर जगह है, तो ये ब्लू वाटर ही है. दिस इज ब्लू वाटर बिकॉज योर ट्रेड इज ऑल ओवर एंड यू आर ऑल ओवर द प्लेस. अब जैसे मैंने बताया, दे आर ऑल
You take a diameter of 3,000 kilometers, Navy knows at all times who is where. This is your extent. Now you physically can't be counting everybody. So what you're doing, you're doing electronically. मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट आपने लगा रखे हैं, घूमते रहते हैं पूरे टाइम। और ऐसे नहीं घूमते हैं वो, उनका पेट्रोल एरिया बना हुआ है, ये पेट्रोल एरिया, दे कीप शिफ्टिंग। आइडिया इज टू कवर द इंटायर इंडियन ओशन एंड बियॉन्ड। हम तो सिर्फ अभी अरेबियन सी और बंगाल की बात कर रहे हैं। वी सी राइट अप टू 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। दैट इज आवर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, which includes all the Seychelles, Mauritius, coast of Africa, entire east coast of Africa, right till then, Madagascar. All these areas come under our area of responsibility. Number one. The second thing is that we are a blue water navy. I mean, you are a ship of 150, 160 ships already, and you got so many submarines, you got aircraft. But if you ask me honestly, we had done a calculation when we were buying the P8I Boeing that India requires aircraft of that kind, a total number of 31 aircraft. How many do we have? We have 8 and 4, 12. अभी 6 के लिए फिर बातचीत चल रही है, right? But the point is that it's an American aircraft. And you know how unreliable has America become today, particularly in the present regime. So they can close the tap. Now, this is our problem. And therefore, the, the C295, which is being built for the Air Force as a cargo aircraft, the Navy's next maritime patrol aircraft will be based on that platform. The only thing is, it does not have endurance as much as the P8I. So what will happen? You'll have to use more than one aircraft at a time. Your time on task will come less. The fuel is only that much. So ये लिमिटेशन हमारी रहेगी क्योंकि हम इंजन नहीं बनाते हैं। हम तो छोटे जहाज भी नहीं बनाते हैं। अभी देख लीजिए how much is the trouble you have so much to do with the Indian Air Force. You see what is the problem they are going. तेजस इंजन नहीं था, अभी इंजन 404 आने शुरू हुए हैं। एंड अभी 404 414 का तो अभी तक कुछ शुरू नहीं हुआ है, बिकॉज दैट डायलॉग इज स्टिल गोइंग ऑन। वी वांट 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इज नॉट हैपनिंग, इट इज ओनली 80%, सो दैट टॉक इज गोइंग ऑन। तभी ज्वाइंट प्रोडक्शन होगी यहाँ पे। देयर आर 3 थिंग्स व्हिच दे डोंट वांट टू गिव यू। यू नो, वन इज द टरबाइन ब्लेड का एक डायमंड एजेस होते हैं, एक तो वो है, दूसरा आपको उसकी ब्लेड्स का जो मटेरियल होता है टरबाइन ब्लेड का वो है। द 3 थिंग्स, those 3 things are important, which they are not giving you because that's the niche technology. But now the HAL and Safran are developing that engine. 61,000 crores has been given, if you remember, in 2 days back. It has been allocated for development of a jet engine with France, with 100% transfer. So they did a study, Rolls-Royce and France, and they found that this is more suitable, both in terms of technology transfer and cost. Ultimately, cost. Therefore, my saying, or maybe many people are saying, but as a defense person, I will say, for next 5-10 years, for India, it is economy, 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 economy. You build it, you are just about 4 trillion. Even if you get 5 trillion, Adiji, GDP, you will have little more flexibility. Now you said influence. Now we have reasonable influence. That is why you will find that wherever the Prime Minister goes, Honorable Prime Minister, you will find that maritime cooperation agreement has been signed with everybody. Why? Because no one country can ensure security of entire trade in Indian Ocean or the world. In 2007, the then Chief of Naval Operation of the US was Admiral Mike Mullen. Admiral Mike Mullen was on a visit to India, and he came to Mumbai. And he came to visit the aircraft carrier Virat. We were in harbor. I was the fleet commander. So we were walking on up and down.
And when he met the press there only on the flight day, and he said that to ensure maritime security in the world, we require 1,000 ship navy. Now he was wrongly quoted that U.S. Navy wants to have a 1,000 ship navy. He said no. The world, all navies put together, should be 1,000. Do you know this was 2007? I think that even now, all navies put together, we probably have not reached 1,000, or we're just about to reach 1,000. We are talking about 2007, 18 years down the line. 350, 350, 700, 150, 850. It may have just about reached. It has taken so many years. Because if everybody is doing, and that is why this Indo-Pacific is important. So all your neighbors, Prime Minister Modi's, the sagar that he has given, and now Mahasagar, it is a lot of meaning. Search is a security and growth for all in the region. आप सिक्योरिटी, आप ग्रोथ नहीं कीजिएगा एक साथ, तो इंडिया का ग्रो नहीं होने वाला. Why? You require trade with everybody. It's only trade which makes you rich. It does. When you fight a war, you are wasting money, and most of the money wasted in the land warfare. नेवी का वॉरफेयर नहीं होता इतनी जल्दी. नेवी इज डिप्लॉयड, डे टू डे रनिंग. यस, पेट्रोल है, लोग हैं, कैपिटेशन है, बट दे आर देयर एनीवे. So that is why you require a navy, a bigger navy. That's why our admirals, right in the beginning, in the 60s, they realized that ships की इतनी cost है, weapons की cost है, submarines की cost है. It will be very difficult for any government to support a navy like this, to ensure security at least in the Indian Ocean. So सबके साथ दोस्ती बनाओ. And that is why we, even if our neighbors occasionally show different traits and are going in line with the Chinese, we don't stop their aid. We don't stop the agreements that we have done. None. Maldives, for example, Sri Lanka, for example, they're all bending towards China, Pakistan. We didn't stop any of the agreements. They, on their own, they will learn. They will realize some point in time. Anytime the government changes, they feel that, oh, I can do without India. He will have a slogan, India out. Not realizing the realities of day-to-day life. Countries are being supported on daily vegetable and khana from here, particularly Maldives. अपना कुछ नहीं है उनका. So after he won, within 1 month he realized that he's being foolish. His ministers told him, go visit. अभी तो मोदी जी को बुला रहा है सर वो इंडिपेंडेंस डे के लिए. That's right. China is not your neighbor. Your neighbor is this man. Call him. Be in good equation with him. They have now, hopefully, he's understood. So these are the challenges in the neighborhood. So our admirals decided that we have a very vast area, though the government at that time was sea blind. They were not looking at entire sea, not at all. Where the Navy was looking from, Gulf of Aden, Malacca Strait, 10 degrees south. Entire Arabian Sea, Persian Gulf, and the Lombok Strait, because they knew Navy ka daira is always very vast. And that is why you will find that, when you meet a naval guy, he will only be talking about world. Because that is his world. He does not meet enemy he only meets no black and white like you have on land. ये हमारा white है, उधर black है. यहाँ पे everybody is gray. Neither black nor white, unless you identify, unless the country has been declared belligerent, you can't fire. These are all international. We are not only going by UNCLOS, there is also IMO guideline, International Maritime Organization. After all, the trade has to go on. You can't stop just because you're fighting with some country. So what is the safety for them? So these are the things which they have. I mean, in a day, there are 15, 16,000 commercial ships in the Indian Ocean transiting through Malacca Strait to Gulf of Aden. So this is a huge task. And that is why the Navy says that we need 3 aircraft carriers, so that you have the air power available now and here. Because अगर आपको अपना influence बढ़ाना है,
then you should also have power projection. You use this word in the beginning, power projection. Now, power projection is best affected by an aircraft carrier, so that your neighbors begin to trust you. No, he's a big guy. If you don't have all this, it's okay. Even China can provide. But if you have aircraft carrier such a huge fleet, anytime they're in distress, you are there. So you have to develop this trust between countries and cooperation. I quoted Admiral Mike Mullen for this reason, and that is why you have to cooperate. Everybody has to put together. अभी हमारे देखिए हमारा श्रीलंका, Maldives, बांग्लादेश के साथ है agreement. We do exercise with them for HADR exercises, so that they can in their own time they can also pitch in. So yeah, this is a our peacetime roles are very high. You suddenly in wartime you can't identify enemy. You can't do that. There's no black and white. No, there's on the border it is black and white. उधर से आ रहा है enemy है. इधर जो बंदे हमारे दोस्त हैं. तो हमारा वो लाइन खींचा हुआ है, लाइन ही नहीं है ना कोई. It's a borderless armed force. If you say border, I used to tell, the Japanese chief of naval staff came to my office in Bombay. So he said, Admiral, you got the world map here? I said, yes, Admiral. I said, look at Bombay. I took a laser pointer, this Bombay. Now tell me who's my nearest neighbor on the western side? Oman. I said, I've got 24 neighbors. And none of them is closer than 1500 kilometers. So he's my neighbor. Period. You are joined by the same water. If you start going like that on that direction, you will reach Oman. I will not reach from Calcutta to Bombay or Delhi, no. So that is why you'll find the naval people right from their beginning, they're trained in that manner to look at the map, look at the hugeness of map. And these are the areas that you must. At the moment, we have assets adequate to protect all interests within Indian Ocean. But for say Indo-Pacific, yes, we can. But the number of ships deployed will be less because our primary task is in our backyard, which is Indian Ocean. यहाँ पर एक बड़ा फनी सा सिचुएशन है सर. वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसकी who's a growing country. ठीक है, इकोनॉमी बढ़ रही है अभी, जैसे आपने बोला 4 से 5. लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज फार एज मैरिटाइम डोमेन इज कंसर्न बहुत ज्यादा है. नाउ वी कैन से भी अब मेरी नहीं है, मैं जरा साइड पे, वो तो हो नहीं सकता ना. इट्स नॉट पॉसिबल. यू कैन जस्ट मैं नहीं कर रहा यार, कोई जो मर्जी करे, ये मेरा है, इसके आगे जो मर्जी हो, इट डजंट रियली मैटर. दैट यू कांट डू बिकॉज आपको फ्यूचर के लिए भी प्लान करना है. इफ पीपल कम आउट एंड आपके साथ फिर वो पंगे करेंगे, देन यू वोंट लाइक इट. सो यू हैव टू दिस थिंग. तो एक बड़ा अजीब सा कनंड्रम है जहां पर आपकी इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है, वेयर यू वांट टू स्पेंड, जो आपको करना है एक्चुअली खर्चा टुवर्ड्स द नेवी. तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, 10 मोर सबमरीन्स. आपकी सबमरीन फ्लीट एटलीस्ट 30-40 होनी चाहिए. उसके अंदर एटलीस्ट 30% ऑफ दैट शुड बी nuclear submarines. Then you're talking about high number of frigates, high number of destroyers, PATI, and your maritime reconnaissance. तो ये एक बहुत बड़ा responsibility है और requirement है, sir, which will take time for it to build. So what do we do in the interim? Okay, let me no, again, very valid question, and I think every intelligent person must have this question. How are you going to meet? So I mentioned about that our admirals realize that this is the responsibility. Then what do we do? Exactly the same question. So they said, okay, we will build ships in India. 1960s. So they went to the government with a proposal that the defense shipyards should be run by naval admirals. All shipyards were being run, अभी थोड़ा बहुत इन्होंने उसको dilute किया है, that it will be headed, the CMD will be a naval guy, at least of the rank of Rear Admiral. So, serving Rear Admiral or Vice Admiral is made to retire, premature retirement. And they are made the CMD of this, right? They don't lose out. They go up to 60 in any case. Pardon me, I'm not laughing because it's funny, sir. I'm laughing because it's such a heavy thought process. किसी को भाई बैठ उधर जाके. Foresight. उस समय से आदि जी
हमारे warships are being built in India. The last warship, Tamal, which just come from Russia, is maybe on the way, Kaliningrad. This was ordered long back. It should have been given in 2012. They didn't. I'll tell you why also. So we started building our ships, but we don't have engines. It requires gas turbine engine. And most of the engines are Russian and now Ukrainian. All of them are in Ukraine now. Zarya is a company which makes most of our gas turbine. And weapon systems we were not making. Luckily for us, this the sonar system, underwater sound जो करता है, जो submarine पकड़ता है, that equipment of the world class was designed and developed by a naval officer, electrical officer. He retired as a commodore. He started the Naval Physical Oceanographic Laboratory, the first CMD. Oh, that is with DRDO. Right now, he is the professor emeritus in Stanford on underwater sound. So, and I have handled a number of sonars of many countries. This is the best in the world for our waters. Best in the world. Please make no mistake. It is best in the world. हमारे वाटर्स में सैलिनिटी ज़्यादा है. अब हम टॉर्पीडो अपना बनाते हैं. अब हम ब्रह्मोस अपना बनाते हैं. सरफेस टू सरफेस. अभी सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश का जो शिप वर्जन है वो नहीं बना अभी तक. दैट इज अ शॉर्टेज. बट द लॉन्ग रेंज मिसाइल जो एयर टू सरफेस टू एयर मिसाइल है सैम, आकाश, ये आपको नॉट आकाश, the Barak engine. Now we are making ourselves 70 kilometers plus range. All our ships have got that. So by and large, the radars are by and large our own or assisted by Israel. That is another area in electronics where we're not very good. So that work is going on, and I'm sure it will happen one day. So you will find that the import content in a ship is very little. Now we have made an aircraft carrier, which is not a defense ministry shipyard. It's a central government shipyard, Cochin, belonging to Ministry of Shipping or Surface Transport, somebody. So the point is that the Navy thought about it in 60s. First of our small ships, 300 tons, came out in 63, 64. And first Leander came out in 70. Leander class frigate, we bought the design from the British because we had a larger population of British ships. After that, where have we gone? We developed it to broad beam Leander, Taragiri, Vindhyagiri. Then we went to even broader beam and more weapons, a new design. Also, I must mention that Navy created its own naval design bureau. This is very important. All ships and submarines are designed by our own engineers. And we send them to do naval architecture, PhD from UK, from Russia, from here, from there. We don't depend on, and this is where the Air Force faltered. Okay, you left all design. Air Force only gave a QR. I want an aircraft which should have this performance. How you make it is your problem. So it has taken 30 years. So we held hand, and this is not the only one. When the ship was ordered on a shipyard, once the construction begins, the Navy puts a warship overseeing team of its serving officers of each specialization under one boss. And every phase of the construction is inspected by these people and certified. Only then the installment of cost is given to the shipyard. Quality control is Navy's. And these boys are all quality control conscious. They are there, they are like a watchdog. Like you say, okay, ship में जब इतना बन जाएगा तो आपको 100 करोड़ और दे देंगे, 50 करोड़ और दे देंगे. Who certifies this? These are the boys, WOT, Warship Overseeing Team. So that is why the Navy's number of ships right now, that is why our naval chief can proudly say, you enter Indian Ocean,
we will track you. We know where you are. It's a very big thing. The first satellite communication satellite was a naval satellite, GSAT 7. I was CISC at that time when we launched. And to my good luck, when I became CNC West from there, we took control in the Western Command of that satellite. I was personally standing there and taking control. I won't tell you where is the control center. But we could talk from the satellite. And my first call was to a ship it was already in Mediterranean going to Murmansk. I spoke to the CEO from my office on the phone. Though design is only 1500 kilometers, Mediterranean is already more than 2000 kilometers. So that is our scientists can do it. Even this Navig system, their own GPS, initiated in the Navy. Because we said GPS jam ho jayega, how do we navigate? We'll go back to doing star sites and sun sight and all that. हमारे टाइम में GPS नहीं था. We would take fixes by looking at stars. We recognize every constellation. आज के दिन में ये स्टार कहाँ पे होगा, ये ग्रह कहाँ पे होगा, कितनी हम जहाँ से जा रहे हैं कितनी एलिवेशन पे होगा, कितने बजे डिसअपियर हो जाएगा. And we could give you position within about 5 to 10 nautical miles in open sea. Hello, my lord. And some people who were good, they could give you less than 5 miles error. So, and this is where we have graduated now. The GPS came when I was about to leave the Navy. तब आया GPS. हम लोग तो GPS जानते भी नहीं थे. So in our own lifetime, at least 42 years that I have been in the Navy, I have seen so many changes. I can't recognize my own ship which I commanded. I went to the ops room once, they took me. My goodness, it looks like, yes, I have come to some new place. Then I would ask my commanding officer, he was my gunnery officer. I was a captain and I was a rear admiral, he was a commander. I asked him, Sushil, where is it? He is now Eastern Fleet Commander now. I said, where is it? He says, sir, that is gone. This is now, this radar, once it identifies, locks on, nobody is required to do anything till the weapon is fired. Only weapon firing, you have to just give an order. That's it. That is where we reached. Otherwise, ops room used to be a very shouting game. Captain shouting, this chap, contact, this, that, primitive. And weapons were very good. We could take on 2, 3 missiles, 4 missiles fired at you by enemy. And now you had a SAM system which could engage all 4 of them at one time within a break of 1, 2, 3, 4 seconds. We have practiced. I have practiced. And they fire at you, live missile. So, these things, these games go on. War game is not only on paper. You actually go what is called the practice missile firing, PMF. All ships will go. Every ship will get a chance to hit. Surface to surface missile, which is flying at wave top and going at very near supersonic speed. If you don't engage, he'll penetrate through your ship and go. And it pops up only in the last bit. How do you BrahMos can't be tracked. It cannot be tracked. That is why Pakistan was very seriously thinking that BrahMos attack will be responded by a tactical nuclear weapon. Till they were reminded, if you use tactical nuclear weapon, India's response will be complete annihilation. You want to live on the map or don't want to live on the map? Choice is yours. Seriously, sir, they want to respond to naval BrahMos with TNW? See, I'll tell you what, we had a bilateral discussion in Colombo 2 years ago. That is the time when a BrahMos had by mistake been fired without a warhead and it had fallen in Pakistani territory. And then next day, the press here, how our press and media is. They are making all kinds of claim. Oh, Pakistan could not track it, could not destroy it. The air defense is bad, this, that. So between Pakistan and India, it is always 1 for 1. You do one thing, I'll do one thing. You will get a response. चाहे हमारी तरफ से हो या उनकी तरफ से हो.
This has been the trend. So they said, not that we were not we could not track. How do you track this missile? And suppose tomorrow it had a warhead and it hit something, how do you respond? So they said we are seriously thinking about using a TNW and response. तो हम लोग थे तीन चार घाघ लोग बुढ़े लोग बैठे हुए थे, बात सुन ली उनकी। हमने कहा भाई देखो ऐसा है, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो फर्स्ट यूज, Mhm. बट if you use any kind of nuclear weapon, if it is on Indian troops, even in your territory, or in Indian territory, or an Indian naval ship at sea, or a ship which has got Indian crew, it will be taken as if you have attacked this country with nuclear weapon, and response will be disaster for you. It will be complete annihilation. It is a policy spelled out by then Prime Minister in the Parliament. Mhm. Though there was a lot of pressure that we should also make tactical nuclear weapon. And Chiefs of Staff Committee, we are all part of it. We did a lot of work in this. Then you will not have control on the escalation ladder. He fires something at 70 kilometers, you will fire at 80 kilometers. He will respond at 90 kilometers. You will fire at 100 kilometers. Because then the nuclear weapon will become like a normal weapon. And imagine the disaster and the impact on people, the radiation. Where do you stop? अभी तो ठीक है, उन्होंने चार गोली मारी, हम मार दिए, हमारे एयरक्राफ्ट गए, हमारा एयरक्राफ्ट गिरा, वो आया तो उसका हम दो गिरा दिए. This is a problem. This is a big problem. That is why when you apply naval power, it will always be a massive retaliation. We can fire every missile like it can be fired from land, other than nuclear weapon. Mind you, all our weapons have to be longer range because you're firing far off and far off from sea. You don't want to get into their strike range. So your weapon ranges are many more times than what is fired from land or from aircraft. So all these missiles, they were first developed for the ship. BrahMos, it was only ship version. Ships fired Andaman Nicobar Island here and there. And then the army was given this. And then the Air Force. Right? So, and it has come very handy. You know. But point is, if you have to fire BrahMos, you don't require aircraft to fire it. Even the 9 terrorist camps which were blown, the 7 of them by the army action, 2 by Air Force. Air Force land based. So, we have to, you cannot sit back, whether it is army, whether navy, or it is Air Force. You can't. You just look at the Air Force number of squadrons. If we were making our own aircraft, we would have produced it in dozens by now. Now you have to buy. Each aircraft is very $250 million. Hell of a lot. Which is not the case with the ship. हमने पानी का जहाज बनाया, कितने भाई? ओ इसके ऊपर तो 10,000 करोड़ लग गए. अरे भाई, दुनिया में 10,000 करोड़ में मिलेगा तुमको कोई शिप? नहीं मिलेगा. $3 billion एयरक्राफ्ट कैरियर है. यू आर टॉकिंग अबाउट 3,000 करोड़. यहाँ पे बन गया, अपना है, हम उसको अब एक बार में नहीं पे करते हैं, 15 इंस्टॉलमेंट में देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सारे शिपयार्ड तो सरकार के ही हैं. So you decide. A lot of people say, no, it costs so much. One of my Air Force friends, I'm a naval aviator, so I got a lot of friends in the Air Force. I've served with them. They said, no, but it's a target hypersonic missile. मैंने कहा, by the way, do you know that it's easier to find a air base than to find a ship? Why can't hypersonic missile be aimed at your
Ambala or Gwalior. It'll go first. So once you wear a uniform, you are at risk. Just because you're at risk, it doesn't mean that you don't fight. Everybody on the road is at risk. There are more people dying on the road accidents. Does it mean people have stopped walking on the road? Does it mean people have stopped driving? No. You see, life is full of uncertainties. Yes, the risk factor is prone a little more in the armed forces. आप हवाई जहाज ही ले लो या पानी के जहाज ले लो सबमरीन ले लो. I mean, there is some kind of peacetime casualty is also acceptable to a certain percent. I won't tell the percent, but it's acceptable. We know it's a world level average. पीस टाइम में कुछ हो गया एक्सीडेंट हो गया ये हो गया वो हो गया हैंडलिंग फायर आर्म्स हो गया आई मीन ऑन द शिप यू आर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ फायरवर्क्स कहीं भी अगर आग लग जाए तो फायर ऑन अ शिप इज द बिगेस्ट इमरजेंसी दैट इज व्हाई फायर फाइटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम कमांडिंग ऑफिसर to the lowermost rank everybody fights the fire and you have to keep practicing including CO. He also wears the same thing. He also goes with the hose. He also goes with that. Every compartment has got a firefighting. Every compartment can be sealed and segregated. That is why it's called the NBCD status XYZ. And all the hatches have got clips marked XYZ. इसको X में बंद करना है, अगर Y में बंद किसको बंद करना है, Z में किसको करना है, ताकि अगर फ्लडिंग हुई तो उसको आप सेग्रीगेट कर सकते हो. अदरवाइज पूरे में भर जाएगा ना पानी, आग चारों तरफ हो जाएगी. सो दिस इज टू कंटेन. सो it's a city, particularly aircraft carrier is a city. It's like a very 6-7 story building. You can't reach from one end to other end and you get lost. On the aircraft carriers of US, the number of people are nearly 4,000. 7 decks. Every deck has got a separate department. They have a wing commander level officer in charge for men. Everybody can't be brought together at one time. अगर कहीं आग लग गई ना तो उस कंपार्ट में कुछ लोग तो मर ही जाएंगे फायर फाइटिंग के बावजूद भी. You can't, I mean, you can't, as I said, you can't fight against nature. Some beating you have to take. That's why fire and flood is the biggest emergency on a ship or submarine. And it's not that it will tell you you're coming, it will happen on its own. So what do you do? It's just like aircraft. Engine can fail. You can get shot. So what happens for that duration of sortie? This chapter you're already living on it. It's your home, it's your working place, it's your relaxing place, everything. गैली होती है खाना. अब एयरक्राफ्ट कैरियर में बड़ी 1,500-2,000 लोगों को खिलाना है ना, 3 मील सवेरे की चाय. दैट ऑल गोज ऑन. गैली है तो कितना सामान कैरी करना होगा इतने लोगों के लिए. तो it's a big city, it's a really the management of a ship, particularly bigger ship. That's why as you experience gain, then you become more proficient, more exposure to command leadership. That's why fleet commanders are rear admirals. He understand every ship. 20-22 जहाज होते हैं उसके अंदर, सबमरीन्स होते हैं, and he's moving with the whole bloody kafla. So our ancestors, our forefathers, I would say, they have really been very far thinking. And that is why even with least budget of all three, Navy has maintained this because most of the things are indigenous. 12%, 13%, 14% of defense budget. अब थोड़ा बढ़ा है, 16% हो गया. But it was just about double figure in 40-50 years. That is why a lot of ships used to be imported at that time, because some of it, those countries were not willing to give you only weapon system. They buy a ship only, then you will do it. अब नहीं खरीदेंगे. डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, सबमरीन सब तो आ गए. लीज पे लेंगे क्योंकि नंबर्स हमको बढ़ाने हैं. उतनी जल्दी जल्दी हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते. अब देखिए, डिफिकल्ट वर्क इंडिया डज बेटर देन द इजियर वर्क.
and I say this with great conviction. We made nuclear submarine first, and then we started diesel submarine. न्यूक्लियर सबमरीन मोर कॉम्प्लेक्स. हम जो पहला हमने बनाया है, उस समय तक हम अपना डीजल इंजन डीजल सबमरीन नहीं बनाते थे. अभी हम फ्रांस के साथ मिल के बना रहे हैं स्कॉर्पियन, और अभी 75 इंडिया somebody has been given a contract. So we made nuclear submarine first, nuclear reactor with nuclear weapon, ICBM, SSBN पहले बनाया. नॉट इवन नॉर्मल न्यूक्लियर सबमरीन विद कन्वेंशनल वेपन. अब वो बनने का ऑर्डर हुआ है, 2 के लिए अप्रूवल मिला है. तो उसके लिए पैसे चाहिए, एंड वी डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी. यू नो, टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, नेवी ने तब सोचा कि नो, वी विल रिक्वायर आईसीबीएम फ्रॉम सबमरीन. व्हाट विल हैपन इफ यू गेट न्यूक्लियर अटैक? हाउ विल यू रिस्पॉन्ड? बिकॉज दे माइट अटैक योर लॉन्च साइट्स इन इंडिया. इट इज नोन. लैंड पे है चाहे एयरक्राफ्ट में, तो पता है ना, एयरबेस से टेक ऑफ कर रहे हैं, न्यूक्लियर केपेबल है, उड़ा दो. हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? दैट इज वाई दिस न्यूक्लियर सबमरीन वॉज इंपॉर्टेंट. नेवी कन्विंस द गवर्नमेंट, दे गेव एन ऑर्डर. इट टुक अ लॉन्ग टाइम, एंड आई मस्ट से द डिजाइन वॉज given by the Russians. We paid money, and they assisted in fabricating the. We already had reactors, uh, peacetime reactors. So that reactor they did. Now from the second one, it is completely Indian. Completely, everything is Indian. Because you could not have given it to anybody, because you wanted to maintain secrecy. In spite of being in the Navy, 10 साल से चल रहा था. I didn't know till I came to staff college. वो भी क्या? It came as a surprise. Then Chief of Naval Staff Admiral Taliani, he came to give a talk. 1986. Yeah. Every chief goes for it. He gave a talk, and he is a very good speaker and all that. When question answer session came, one American student got up. Sir, I am Major so and so. Yes. Sir, we believe that India is making a nuclear submarine. It was all under carpet. Nuclear submarine, and if that be so, then when do you think that it should be out at sea? Now, CNS must have been briefed. Oh, Major so and so, you are the guy who's from CIA, is it? Straight away, pakad liya usko. He said, yes, we are making nuclear submarine. I'm making this statement. Inshallah, if all goes well, by so and so it will be at sea. We were all stunned. No naval officer, none of the directing staff. So it came as you can't visit that ship. It requires approval at the highest level. I mean, I as a vice admiral could visit. That too after approval from NHK. नहीं जाते लोग, जाने ही नहीं देते वहाँ. It is so much of classification. Classified, very classified. पहला वाला तो पता ही नहीं लगा था कब हुआ. वो कहते थे लोग उसको, उन्होंने ATV project, this, that. ठीक है. So I would say that our forefathers were very far thinking, and that is why you'll find the Navy's plans department, or those who are posted in NHQ looking at future, they really look at all kinds of, because दायरा थोड़ा बड़ा है ना उनका, इसलिए समंदर कितना बड़ा है आपको बताया मैंने. So we are okay. Thank you, sir, for that. This was, I mean, आपने answered. बड़ा, हाँ sir, you've actually given us a very interesting outlook. क्योंकि हमको ये चीजें समझ में आती नहीं है, and plus we will not be able to understand it because one, we've never served in the forces. Two, the nitty-gritties of it, which come from the inside only. Yeah. Somebody from the inside can tell us. I agree. So that is very critical. I'm Thank you so glad much, sir. Thank you. You got me here, and I hope that your viewers have understood the nitty-gritties, as you call it. And all I can assure all your viewers that your Navy is so strong that nobody can take panga in the Indian Ocean. Nobody. And that includes China, ladies and gentlemen. We have that kind of power, firepower. We have that numbers. But yes, the ones which are already on the
make. There are 36 ships, I think CNS Yeah. mentioned, Yeah. ships Yeah. and submarines, which are on the build. That funding has to continue so that they roll out in time. Yeah. It takes long time. First of all, it's a huge thing. It takes long time, and mind you, let's take submarine or let's take ship. That damn thing, the engine has to be put before you make most of the ships. Otherwise, how will it go inside? And these engines are huge. Mm. So at some stage, when you start putting the top cover in the submarine or other decks, this thing must go inside. Otherwise, how will you make the take on top? You'll have to cut it. So only when you're only up to keel is laid down and it has come to, let's say, second deck, then now you have to put. So you have to identify, you have to know the engine, you have to negotiate, you have to pay, you have to work out all the paraphernalia of small equipment, what will go here. Then you put it there, you fix it, and then do a trial, run it open. Because once you put the deck, you can't take it out. Now it is there for life. It's a factory. If you go and see the engine room, it's like a factory. Mm. Mm. 2 engines, 4 engines, huge, massive. So you are sitting on fire. So I can assure you that your navy is very strong, but make it stronger. Have more numbers. Like Adiji mentioned, when will you influence outside? In the Pacific, we have influence, but not to the extent that we want. For that, the assets up to you more so that you can guard the Indian Ocean. People always think maritime security means 7,500 kilometers of coastline. It's wrong. Maritime security finishes at that place. It starts at 3,000 kilometers. भाई कोई आपके घर आ रहा है तो आएगा ना चल के चाहे उस शिप से ही आया हाँ. ना. How will he come? How will you have to track him? You have to find him out before he comes anywhere near your exclusive economic zone, so that you can remove him. Not allow him to come in your area. Yeah. क्योंकि अगर उसके पास भी वेपन है, अगर वो 100-150 मील आ गया तब तो तुमको ठोक ही देगा ना वहां से. He's Mm. also got same missiles. So you have to take him out at sea only. Otherwise, your shore Wonderful. will become vulnerable. Even Yes. in Ops Sindoor, Navy was ready. I met the chief of naval staff. He said we were ready, everything loaded, just wanted an order. All targets could have been destroyed by BrahMos. All. They were all within range. Trust As me, you sir. know now, yeah, now the We would BrahMos have, is 800 kilometers range now, and that should be fitted anytime. we would have loved to see that happen. Hmm. But what And happens? No, that will open it to big economic yeah, warfare. yeah, 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 Then your merchant ships will start getting hit. Then yeah. you are actually either you're spreading the war or you're removing him completely. You have to be Mm. ready for both. Naval war is, you take history. Naval war is decisive. Khatam. Achhi navy hai, you will win. Like Americans did not give up. The Japanese came from where? And they hit Pearl Harbor. See the distance. They destroyed all the aircraft carriers. But the Americans didn't give up. Entire America got into act. They produced aircraft carrier, and they went back, and it forced. They had to drop an atom bomb, not one, two. Yes. That forced Japan to surrender. So, the response to their naval attack was an atom bomb. Can you imagine what kind of attack, what kind of navy Japanese had, and where from? Where is Japan? Where is Okinawa? Where is Pearl Harbor? 700 miles, 800 miles. So I enjoyed Adiji, and I'll be at your weekend call whenever you wish. And Yes, sir. thank you Please don't very say much. that, sir. Thank you so much. Always a pleasure. Namaskar. And जय हिंद. भारतवर्ष सेफ है, आप चिंता नहीं करें. बस आप समझ जाइए कि आपकी नेवी बड़ी स्ट्रांग है और हमारे पास जो है उससे हम सुरक्षा अभी कर सकते हैं, लेकिन इनके नंबर्स हमें बढ़ाने होंगे, इनको हमें रिप्लेनिश करते हुए रहना पड़ेगा. Mm. Correct. Thank you, sir. Thank Jai you. Hind. जय हिंद.